ओके, टेस्टिंग के लिए तो ये हो गया भाई। अब हम करते हैं HTML और CSS पे थोड़ी स्टाइलिंग। स्टाइलिंग के लिए हमें बेहतर है कि हम इस पर एक डिव में ही ले लें। ओके, साइट कंटेंट के लिए हम रखेंगे साइट डेटा हाइफन डेटा। कॉपी दिस, बैकग्राउंड कलर ग्रे, सेंटर, margin top, एंड नाउ इसमें हम पैडिंग देंगे। राइट एंड लेफ्ट तो जरूरी नहीं है, बस टॉप एंड बॉटम चाहिए थोड़ी सी। दैट्स ओके। नाउ चेंज द कलर्स, कलर हंट। इस वेबसाइट पे हमें सारे मैचिंग कलर्स मिल जाएंगे, जैसे selecting this color as the heading. Let's give some border radius of 5px. Even this. Okay, nice. अब इसमें थोड़ा सा कलर होना है HTML5 and CSS3 के बैकग्राउंड में, तो ये कलर देख के देखते हैं। Now color should be this. Okay, hash is missing. Okay, fine. What if we give border bottom to every single P? Font size should be large. Padding bottom with px. Okay, looks good. Now we are going to populate the data here inside it. Below this, CSS Angular. This should come above. Okay, looks good. Now I think we are done with our UI. यहाँ पे हमें एक टेबल बनाना है। होम स्क्रीन पर एक टेब ले लेते हैं। टेब में एक टेबल, टेबल में एक आएगा टी हेड और एक आएगा टी बॉडी। ओके फाइन। टी हेड में टी आर, टी हेड, आएगा आईडी,
ईमेल हम यहाँ पर नहीं शो करेंगे, यहाँ शो करेंगे कोर्स ड्यूरेशन, date of birth, we will just write DOB, this should go cap, and date of birth should go next to name. Now we are going to create one more input. It should be year, first year. T body में आएगा TD, तो चलिए अब हम टेबल को स्टाइल करते हैं, देखते हैं ये इस तरह का लग रहा है। पहले टेबल को नॉर्मली स्टाइल करते हैं, यहाँ से टेबल एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर, TH and TD should have padding और 1 REM। अगर 1 REM मिल जाएगा तो थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी हर जगह से। अब हम देंगे टेबल हेड की बैकग्राउंड में एक ग्रेडियंट कलर। आप चाहे तो यहाँ से कौन सा भी उठाकर अपने पसंद का ग्रेडियंट कलर बैकग्राउंड में टेबल के हेडिंग में दे सकते हैं। मैं ऑलरेडी एक सेलेक्ट कर चुका हूँ। ओके गुड। ये जो टेक्स्ट कलर है वाइट में आना चाहिए, कलर वाइट। गुड। टेबल डेटा के बैकग्राउंड में हमें चाहिए एक अच्छा सा कोई कलर। ये कलर मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा था, आप चाहे तो कोई भी कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। Looks good. ID, name, date of birth, course, duration, year of passing. There's something still missing. हम यूजर से इनपुट लेंगे एक इमेज का भी, इमेज भी पोस्ट कराएंगे, यहाँ पर एक इमेज शो भी करेंगे। तो इसके लिए हमें एक और चीज ऐड करना है। डॉक्यूमेंट्स में इनपुट टाइप फाइल आएंगे, ये आएगी सबसे आखिर में। और यहाँ पे आना चाहिए TH प्रोफाइल और यहाँ पर इमेज, यहाँ पर एक इमेज आएगी। बाकी डेटा तो सेम ही है जैसे मैंने पहले आपको बताया ना। हम इस टेबल को यहाँ से हटा देंगे ताकि जब हम सर्च करें तभी ये इनपुट, ये सारे डिटेल्स के साथ टेबल शो हो, एक्चुअल डिटेल्स। इट शुड बी डायनेमिक। वेरिएबल क्रिएट करेंगे, विजिबल टाइप बूलियन इक्वल्स फॉल्स। ओके, हमने ये प्रॉपर्टी को हाइड कर दिया है। अभी इसे प्रोग्राम करेंगे बैकएंड से, जब हमारा डेटा फेच हो तभी ये विजिबल ट्रू हो और यहाँ पर हम डायनेमिक डेटा लोड करवाएंगे। तो हमारे यहाँ पे यूआई कंप्लीट होती है। कंग्रेचुलेशंस, आपने यूआई पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं बैकएंड की तरफ, जहां पर हम एपीआईज क्रिएट करेंगे, रेस्टफुल एपीआईज, पोस्ट और गेट मेथड्स यूज करेंगे, और इमेज इनपुट कैसे लेते हैं और उसे कैसे सेव करते हैं उसके लिए हम यूज करेंगे मल्टी स्टोरेज। तो ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ आगे के ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर स्टेइंग स्टिक एंड कंप्लीटिंग द फ्रंट एंड पार्ट। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो चलिए हम शुरू करते हैं बैकएंड। यहाँ पर मैं टर्मिनल खोलूंगा।
make dir backend, cd backend, now touch app.js, npm init --- yes, that's it. ls. Now let's open this in VS Code. Good. Now let's install some packages. हम इसमें कोर्स यूज करेंगे, एक्सप्रेस यूज करेंगे, mongoose यूज करेंगे एंड multer. It has some issues with my ownership, so I'm doing sudo npm. Now we have all dependencies installed, required dependencies. यहाँ पे हम const express also require express const course require course, and also mongoose const mongoose require mongoose. Done. And now let's try const port, also 3000 for now, keeping it static. App dot listen port request console dot log running on port. It will show the port. Const app equals to express, and you are going to app dot use course app dot use express dot json, and then app dot use express dot url encoded extended true. Okay, we forgot to install nodemon. nodemon इंस्टॉल करने का फायदा हमें ये है कि हमें बार बार ऐप को एग्जिट एंड रन करना नहीं पड़ेगा. जब भी हम चेंजेस करते हैं nodemon ऑटोमेटिकली चेंजेस डिटेक्ट कर रिस्टार्ट होता है. इट रिक्वायर्स sudo. ओके डन. यहाँ पर एप्लीकेशन does not require app.listen. Okay, fixed. Now let's try nodemon. Port. और हम एक और काम कर देते हैं यहाँ पे. जब भी अगर हमें कोई एरर आए तो सही तरह से हमें एरर भी दिखे, तो इसके लिए एक फंक्शन लिखना पड़ेगा app.use. ये एक एरर हैंडलर फंक्शन है जिससे हम एरर्स हैंडल कर सकते हैं, देख सकते हैं एरर का कॉज. if error.name equals so validation error or val errors equals to empty array. इसकी कीज जो है ऑब्जेक्ट डॉट कीज ऑफ error of errors.
Now we are going to look through each error by their key. Well, errors dot push errors of key, इसकी जो की होगी उसका मैसेज. res dot status 422 dot send val error. That's it. ये हो गया हमारा एरर हैंडलर. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरर हैंडलर. Now let's head towards structuring our backend code. एक फोल्डर बना लेता हूँ db. Now helper, इसमें हमारी मोल्टर की प्रोग्रामिंग होगी इस फोल्डर के अंदर. एंड एक फोल्डर बनाएंगे पिक्स. दैट्स इट. नाउ डेटाबेस में एक फोल्डर बनेंगे मॉडल. एक फाइल बनाएंगे mongodb.js. अब स्टार्ट करते हैं पहले मॉडल से. मॉडल का नाम रखेंगे student.js. यहाँ पे mongoose इंपोर्ट करेंगे const mongoose. Now const schema, student schema or user schema, you can name anything. Student schema equals to mongoose.schema. यहाँ पर आएगी सबसे पहले स्टूडेंट आईडी. टाइप स्ट्रिंग. नेम टाइप स्ट्रिंग. That's it. Module dot exports mongoose dot model student student schema. Okay, that's it. Mongoose model is now ready.